आज हम देने वाले हैं मॉक नंबर 6 फ्रॉम ऑलिव बोट. सो लेट्स स्टार्ट. People who were born after the year 2000 have a temporary affection for modern pop music. Pop music loses its popularity once the trends have passed. However, they enjoy listening to music from the era of the 1970s and 80s, when each song's lyrics had a deeper meaning and the song's rhythm seemed even more refreshing. The younger generation of today has no musical taste. The music composer of 70s and 80s were more creative than today's composers. I think neither one or two can be concluded. मिसिंग टर्म इसमें क्या है, +1. देन इसे लिख लेते हैं एक बार. 15, 16, देन क्वेश्चन मार्क, 51, 115, देन 240. तो इसमें हो रहा है +64. इसमें हो रहा है +125. ये 5 का क्यूब, ये 4 का क्यूब. तो इसमें 3 का क्यूब माइनस कर दें अगर, तो हो जाएगा 24. इसमें मिरर इमेज बतानी है. आई थिंक फर्स्ट वाली ही होगी. हाँ, फर्स्ट वाला ही होगा. ये 15 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर 576. एम्बेडेड इन द गिवन फिगर, तो ये तो नहीं होगा. और ये भी नहीं होगा. ये हो सकता है थर्ड वाला. बाकी फोर्थ क्या है, तो फोर्थ भी नहीं होगा. ओनली थर्ड इज पॉसिबल. CAUTRE. अगर 3 से स्टार्ट करें तो ये हो जाएगा URC 254. 2 पे क्या है, A. तो पहला तो नहीं होगा. और B क्या है, 21. AC 43. 65. थर्ड क्या है, 456. 456 1 2 3. 1 2 3. 1 3 6 1 3 6 2 4 2 4 एंड 5. क्यूरेट हो सकता है, तो आखिरी वाला होगा इसका, क्यूरेट. A town is facing frequent transformer burnouts due to widespread power theft through illegal hooking. This also causes voltage drops and damages household appliances. Install smart meters in theft-prone lanes, upgrade exposed lines to safer bundled cables, and run targeted enforcement drives against repeated offenders. Cut electricity supply to the entire town every night. तो ये तो नहीं होगा, तो only one follows. Only course of action one follows. OT 15 plus 5, 20 plus 5, और ये भी +5. इसमें भी +5. 1 + 5 6 + 5 और 18. यहाँ -5 हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा. बाकी ये भी सही है, ठीक है. BDEF 2 5 9 14.
2 5 9 14 +3 +4 +5 तो +6 हो जाएगा t, और t से तो एक ही है, ये वाला होगा। फाइंड x इन द सीरीज, तो ये क्या हो रहा है, -7 -11 -15 -19 -23, तो हो जाएगा 25। x विल बी इक्वल टू 25। इसमें क्या है, इफ़ मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, तो ये हो जाएगा 32 + 14 माइनस कहाँ है, माइनस मीन्स डिवाइड, और डिवाइड मीन्स माइनस, और प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 34 - 24 दैट इज इक्वल टू 10। 6 person like different things, paintings, coins, novel, acting, fashion and designing। तो 6 person है, A B C D E F। A likes acting, B does not like painting or coins, तो पेंटिंग और कॉइन्स नहीं B लाइक करता है। E likes fashion, C and D do not like coins, ओके, तो ये कॉइन्स लाइक नहीं करते हैं। देन तो कॉइन तो फिर F लाइक करेगा कॉइन्स, और B अगर पेंटिंग, D लाइक सिंगिंग, तो यहाँ हो जाएगा सिंगिंग। हु लाइक नोवेल्स, तो B या C में से कोई होगा, नोवेल्स, तो पेंटिंग यहाँ हो जाएगा, तो नोवेल्स बचा, तो नोवेल्स B लाइक्स नोवेल। इन अ कोडेड लैंग्वेज द सिंबल आर एज फॉलोज, तो इसका मतलब है माइनस, तो हो जाएगा 27। देन इसका मतलब है मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब है प्लस, इसका मतलब है डिवाइड। 54 + 4 दैट इज 58। While introducing Suyog, Anisha said, "He is the husband of the only daughter of my father-in-law." Only daughter of my father-in-law. He is the husband of the only daughter of my father-in-law. How is Suyog related to Anisha? While introducing Suyog, Anisha said, ये अनीशा है, ये सुयोग है। He is the husband of the only daughter of my father-in-law. तो how is Suyog related to Anisha? I think brother-in-law होना चाहिए, brother-in-law। P is brother of Q, R is mother of P, S is sister of R, T is son of U, Q is brother of T, T is son of U, तो T is son of U, Q is brother of T, V is the father of S, okay, W is wife of V. Which of these statement is true? W is the grandmother of T. P is the brother of Q, ये इसका भाई है और ये इसका फादर है, तो W is the grandmother
ऑफ टी, तो हो सकता है पी इज़ द नेफ्यू ऑफ एस। आई थिंक बोथ, दोनों ही हो सकते हैं, या ओनली टू होगा, लेकिन आई थिंक बोथ ही होगा इसका, दोनों ही सही लग रहा है। 6 cars are parked in a linear row facing north direction. Car C3 is parked at the end of the row. C4 is parked second to the left of car C3. C4 is parked second to the left of car C3. Car C1 is parked third to the right of car C6. Car C5 is not an immediate neighbor of C4. तो अगर C5 यहाँ रखें, यहाँ भी आ सकती है। C1 is parked third to the right of C6. 1 2 3, and which car is parked immediately left of car C2? तो C2 यहाँ आ सकता है, तो C6 हो जाएगा। Second to the left of C3, C1 is parked third to the right of C6. C5 is not an immediate neighbor of C4. Left of car C2, तो आई थिंक C6 होगा। डीएक्टिवेटर, तो लास्ट में ई आएगा, अगर डी इन्होंने लास्ट में भेजा है, तो अगर ये लास्ट में भेज दें तो ये वाला होना चाहिए। देन ई इन्होंने फोर्थ पे भेजा है, तो सी अगर फोर्थ पे भेज दें, अच्छा इसका बताना है ना, हाँ ए आएगा लास्ट में और फोर्थ पे आएगा बी, तो ये वाला होगा, एक ही ऑप्शन है ऐसा। डी ई एफ बी सी डी एस टी यू ए बी के एल, तो ये वाला होगा। इसमें क्या है, -54 या 53, देन -54 और 15 59, देन -5 और 56 61, तो -6 -2, mm, 368, 315, 256, 19557, इसके बीच में डिफरेंस है 19, 1 कैरी 6, तो ये भी हो जाएगा 9, हो जाएगा 199 का। इसके बीच में डिफरेंस है 8, ये हो जाएगा 98, ओके। इसके बीच में डिफरेंस है 0 2, 120, तो इसके बीच डिफरेंस होगा 221 या 121, ये बाद में देखते हैं।
12, 15, 18, 21, 24, 27 यानी कि ए, 26, 25, 24, 23, 22, 21, तो ए यू. Consider the following two address and identify whether they refer to same person or address. Sunita Gupta, flat 19, C block, Silver Residency, apartment Jaipur 302001. Likely to be the same address. Lisa spent a total of 250 on bookmarks and notepads. Each bookmark cost 10 and she bought X of them. She also bought 8 notepads at 15 each. What is X? 13. You see a man constantly hitting a 4-year-old child who is crying. What should be your first reaction? You do not intervene. You question the child to know. You ask the man to stop. You make a video of the incident to post. You ask the man to stop hitting the child. In a certain code language, this means B is the son of A. देखते हैं तो means इसका मतलब है B is the wife of A, यानी कि Q is the wife of P and mother of C and mother of R. अब इसका देखते हैं. B is the husband of A, तो S is the husband of R and brother of C and brother of T. अब इसका देखते हैं. B is the son of A, U is the son of T and father of C and father of V. U is the father of V. Okay. How is U related to R? Related to R. I think nephew होना चाहिए. Great is coded as this. Okay. How will target be coded? तो T का कोड तो है 6, तो ये हो जाएगा 6. A का कोड है G, A का कोड है 4, तो 6 4. R का कोड है 7, 6 4 7. G का कोड है 9, 6 4 7 9. 6 4 7 9 एक ही ऑप्शन है. The organizer and event manager have stated that it is compulsory for all the staff members to be present on the 5th of next week. The organizer and event manager have stated that it is compulsory for all the staff members to be present on the 5th of next week. ये तो सही लग रहा है सेंटेंस. It is compulsory for all the staff member to be present on the 5th of next week. सही लग रहा है ये तो. देखते हैं बाद में. Hundreds of migrants work in private firms in Erode. Hundred of migrants, hundreds तो नहीं होना चाहिए. Hundreds of migrants work in private firms in Erode. Hundreds of migrants work in private firms in Erode. 100 of migrants. The fly buzzed around the picnic basket. तो homonym बताना है. A lizard was after the fly. He caught the fly in the outfield. Housefly is a common known insect.
A zipper on his jacket wouldn't fly up. Yoga homonym. If it doesn't rain for a long time, the earth would get very dry. If it doesn't rain for a long time, the earth could be very dry. The earth become very dry. The earth would get very dry. The earth gets very dry. The earth would be very dry. The earth would get very dry. I think सही है. The earth would get very dry. सही लग रहा है ये तो. A person who renounces the world and life of a self discipline, ये तो ascetic होना चाहिए. Ascetic. Had you studied English well for the exam? Had English been studied well for the exam by you? तो ये होना चाहिए. Had been studied English. Has English studied well? Studied. Last वाला ही होगा. The screen had been broken by the old man. The old man had broken the screen. The screen had been broken by the old man. The old man had broken the screen. The housekeeping guy told the guests that they had been using the wrong keys. The housekeeping guy said to the guest, "You are using the wrong keys. You have been using the wrong keys." A drop in the ocean, a small but meaningful contribution. The environmentalists said that the government's efforts were just a drop in the ocean compared to what was needed, a tiny and insufficient effort. Cliche, opposite बताना है. Ancient, sophisticated, engrossing, original. Cliche. Opposite. I think sophisticated. Cliche. The Christmas tree was adorned, synonym पूछी है, with sparkling lights. I think embellished. The phrase psychological contract most nearly refers to psychological contract, a formal employment agreement, an informal mutual understanding. I think an informal mutual understanding. ये देख लेंगे बाद में. The word performative as used in the passage most nearly means performative. ये देखते हैं बाद में. Which of the following best captures the core idea of the passage? HR policies determine organizational success. Digital tool redefine workplace communication. ये भी देखेंगे. Carol said to me, "Why don't you have any qualifications?" Carol asked me why I did not have any qualifications. Carol asked me why I did not have any qualification. Carol asked me why I did not. Why don't you have any? Why I did not have any qualifications. Ask me why did I not. I think यही होगा. Why I did not have any qualification. Unfriendly and seeming to consider yourself better. Haughty. Find the synonym of lucid. Transparent. Antonym of humble. Arrogant. She dashed a book yesterday. She read a book yesterday. The dash cold wind cut through my jacket as I walked to the bus stop. The bitter cold wind
The sour cold wind, the salty cold wind, the sweet cold wind. I think the bitter cold wind cut through my jacket. The bitter cold wind cut through my jacket as I walked to the bus stop. According to Indian Council of Agricultural Research, the fruit plant doesn't need much water and can be cultivated on dry land too. So the center feels that considering the cost effectiveness, its cultivation can be expanded in India. The center has decided this reduces the effort of farmers as well as the cost of farming. The center has decided to promote the cultivation of dragon fruit for its health benefits. According to Indian Council, the fruit doesn't need much water. Okay. So the center feels that considering the cost effectiveness, its cultivation can be expanded. तो I think ये होना चाहिए. हाँ तो यही होगा. Okay, let's go next. It is very difficult to find the exact origin of computers, but it was for only government use and not for public use. According to some experts, computers existed at the time of World War II. At that time, they were used for keeping data, but it was for only government use and not for public use. It is very difficult to find the exact origin of computers. According to some expert, computer existed at the time of World War II. At that time, they were used for keeping data. तो I think ये होना चाहिए. Which sentence contains a word that is spelled incorrectly? Empirical inquiry, immediate. I think immediate is wrong. In which year did Koneru Humpy become the first Indian woman to achieve the title of Men's Grandmaster? No idea. For which international financial institution did the government of India sign 3 loan agreement with over 800 million US dollars for developing project Maharashtra, Madhya Pradesh and Gujarat? ADB, International Monetary Fund, NDB. International Financial Institute, IMF, NDB. बाद में देखते हैं इसे. Under the Mauryan intelligence system, what was the specific term used for wandering spies who moved across different regions to gather information? Vishkanyas, Amatya, Sanstha, Sanchari. I think Sanchari. In the specialized skeletal tissue known as cartilage, the specific cells are found enclosed in a small cavity called lacunae within the solid pliable matrix. Chondrocyte, lymphocyte, phagocytes, osteocyte. Cartilage. then chondrocyte हो सकता है. लेट्स सी. बॉर्डर तो इसकी ट्रिक है बचपन में MBA तो BCPN. After a gap of nearly 33 years, which Indian state has been officially re-included in the Tiger Map of India by NTCA? Tiger Map of India, I think राजस्थान या गुजरात में से कोई. Let's go with Rajasthan. Which of the following traditional music instrument is most essential for providing the powerful rhythm in a Lavani dance? Lavani, sitar, flute, dholki, maybe dholki. With reference to traditional theatre form Jatra, consider the following statement. It originated as part of the Bhakti movement
and was significantly pioneered by the Chaitanya Mahaprabhu. While it was traditionally religious in nature, modern Jatra performances have evolved into include secular, historical and social theme. दोनों ही सही लग रहे हैं. Which of the following economic curves represent the inverse relationship between unemployment rate and job vacancy rate? Unemployment rate and job vacancy rate, तो बेवरेज कर्व हो सकता है. Which of the following GST tax slabs were officially abolished? तो आई थिंक 5 से 18%. या 0 से 5. Let's go with first one. The temples built by the Hoysal Empire exhibit an extreme level of intricate details and ornamentation compared to the granite temples of Chola. The Hoysals primarily utilize soapstone, a material that is soft and malleable when freshly quarried but hardens upon exposure. दोनों ही सही लग रहे हैं. Which of the following best describes the primary strategic reason for India's increased focus on BIMSTEC over SAARC? BIMSTEC allows India to connect South and Southeast Asia while avoiding a largely non-functional SAARC due to tension with Pakistan. यही होगा. Sharda Sinha posthumously Padma Vibhushan was a legendary figure in the field of Sharda Sinha. I think arts. Sharda Sinha, Padma Vibhushan. Let's go with arts. Under which of the following act was Satyendra Prasad Sinha appointed as the first Indian member of the Viceroy Executive Council? Satyendra Prasad Sinha. So I think Indian Council Act 1909. Under the modern planning framework in India, how many SDGs are? 17 SDGs. For which debut work did Jhumpa Lahiri win the Pulitzer Prize? Namesake. Under Article 249 of Indian Constitution, the Rajya Sabha has the power to authorize Parliament to legislate on a matter mentioned in which of the following list? तो राज्यसभा किस लिस्ट में पार्लियामेंट को बोल सकता है? यूनियन लिस्ट, रेसिडुअरी लिस्ट, नेशनल इंटरेस्ट. आई थिंक कंकरेंट और रेसिडुअरी में से हो सकता है, तो मे बी कंकरेंट लिस्ट. Medieval history of Mewar. Rana Hamir Singh is credited with reclaiming Chittor from the Malwa rulers and establishing the Sisodia branch of the dynasty. After the death of Rana Hamir Singh, the Sisodia rulers adopted the title of Raval, departing from the Rana title used earlier. तो दोनों ही सही लग रहा है. Cholia dance, a traditional sword dance performed by artists dressed as ancient warriors, belong to which of the following regions of India? Cholia dance. Malwa, Marwar. I think ancient warrior तो मे बी मारवार. सौराष्ट्र भी हो सकता है. Let's go with मारवार. With reference to the Balwant Rai Mehta Committee, consider the following. Committee was originally appointed to examine the working of the Community Development Program. It recommended the establishment of 2-tier पंचायती राज सिस्टम. आई थिंक इसने 3 दिया था, तो सेकंड तो गलत है. तो लेट्स गो विथ फर्स्ट. हडल्स की हाइट नो आइडिया. Which Indian airport was recently declared the
Country's first high capacity airport to achieve water positive status. तो CSMT या इंदिरा गांधी एयरपोर्ट वाटर पॉजिटिव स्टेटस, आई थिंक ये हो सकता है। एवरी ईयर इंडियन सेलिब्रेट्स नेशनल गर्ल चाइल्ड डे टू प्रमोट अवेयरनेस। गर्ल चाइल्ड डे तो ये होता है आई थिंक 8 मार्च। लेट्स सी। A recent study by Indian researchers identified major gene mutation linked to oral cancer in women, specifically focusing on those with which common habit. तो chewing tobacco infused betel quid. Consider the following statement with reference to Padma, also known as Guru Rinpoche. He is widely revered as the second Buddha. He was an 8th century Buddhist master, instrumental in the spread of this Buddhism across Tibet. दोनों ही सही लग रहा है। चलो मैथ करते हैं। Average saving of Aman from January to July is this. If he saves rupees 4,000 in January and 4,800, then find the average saving of Aman from Feb to June. तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जनवरी से जुलाई है तो यानी कि 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 42, 21, 2520। If he saves 4,000 in January and 4,800 in July, तो 8,800 इसमें से अगर माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, अब बचे 5, तो ये हो जाएगा 3,280। The volume of two cylinders are in the ratio C1 and C2. If the radius of C1 is 2/3 of the radius of C2, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर। ये हो गया H1। तो इसकी अगर हम 3 मान लें रेडियस, ये हो गया H2। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ C2 टू द हाइट ऑफ C1? तो हो जाएगा 4:9। कुछ गलत करें हैं क्या? वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर आर इन द, अच्छा हाँ, तो ये हो जाएगा 4H1 अपॉन 9H2 इज इक्वल टू 5:12। तो ये 3, ये 4, तो ये क्या हो गया 15/16। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ C2 टू C1, तो ये पूछ रहा है 16/15 वाला। तो ये रेशियो क्वेश्चन में क्या पूछा है ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो सकता है। O इज़ द सर्कल सेंटर, BAC की वैल्यू दी है तो बना लेते हैं डायग्राम। O अगर सर्कल का सेंटर है एंड BAC इज़ 47.4, देन क्या OCD पूछ रहा है। तो अगर हम इसको कॉमन वो लेके चले कॉर्ड को, तो ये भी हो जाएगा 47.4 और O इज सर्कल सेंटर, तो OCD पूछ रहा है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी 47.4 है ना। OCD भी 47.4 होना चाहिए बिल्कुल। tan 3 की वैल्यू दी है, tan प्लस कॉड पूछ रहा है, यानी कि ये पूछ रहा है 5 - 2√6 प्लस 1/5 - 2√6 होगा, तो ऊपर जाके हो जाएगा 5 + 2√6 और नीचे तो 1 बचेगा, तो ये हो गया कैंसिल। tan इज़ द आंसर। हाइट ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द
second floor, height of a building from the base of the second floor to the topmost floor is 32. ओके ये सेकंड फ्लोर है, टॉप मोस्ट फ्लोर है, ये 32 है हाइट. बेस ऑफ द सेकंड फ्लोर, a ladder of length 32 meter is placed against the building such that it reaches the base of the second floor. Okay, from the foot of the ladder the elevation of the top of building is 60 degree. Okay, what is the height of the building? तो हमें ये निकालना है. तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज sin 60, परपेंडिकुलर sin 60 is equal to perpendicular upon hypotenuse. ये हो जाएगा 16√3. So this will be 32 plus 16 into 1.7, 16 7 जा 112, 16 27.2. ये लगभग 59 कुछ हो रहा है. गलत कर रहे हैं क्या? A height of building from the base of the second floor to the topmost floor is 32. A ladder of length 32 meters placed against the building such that it reaches the base of the second floor. From the foot of the ladder the elevation of the top of the building. अच्छा, तो ये है सिनेरियो, ये 32 है. A ladder of length is placed against the building such that it reaches the base of the second floor. Okay, तो ये है हमारा 60 डिग्री. तो डिस्टेंस आ जाएगा tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ये आ जाएगा 32 प्लस x अपॉन में √3. हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, ये है 32. बाद में देखते हैं ऐसे. If the ratio of the corresponding sides of two similar triangles are, then find the ratio of the areas of this. तो ये हो जाएगा 37 का स्क्वायर और 41 का स्क्वायर. तो 37 का स्क्वायर ये होगा 1369. अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो √5 होता है 2.23, √6 होता है 2.44 और √7 होता है 2.64, √3 होता है 1.73. तो 3 इंटू √5 हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6. 2 इंटू √7 हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 5.28. ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 36, 8.65. ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, 17, 4 2 ज़ा 8, 9.76. सबसे बड़ा है ये 4√6, देन 5√3, 4√6, 5√3, देन 3√5 एंड देन 2√7. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछिए बड़े से छोटे में. A line is equal to this passes through, find the value of m. तो 10 is equal to 7m minus 18, m is equal to 4. इवेल्युएट करना है इसे, तो ये हो जाएगा 2. तो 150 माइनस 20, 130. Number of diagonals of a regular polygon n into n minus 3 upon 2, 90. The cost price of an article is 5/8 of its mark price.
ओके, MP अपॉन CP ये निकालना है, ये हो जाएगा 75, 15 टाइम्स 120, तो प्रॉफिट हो रहा है 20%। प्रॉफिट ही पूछी है। 4 cube of same lengths are melted and 9 by pi square part of it is formed into a sphere. Now cube of maximum volume, ये बाद में देखते हैं, इसको एवेल्यूएट करना है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी 8 10 10.08 8 10 10.08। Technician A alone can complete a circuit design in 12 days. Technician B alone in 18 days. They work together and earn this shared in proportion to work. B का शेयर बताना है, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2 8 16 1560 इंटू 2 3120। Cost of 3 shirt and 2 jacket is this. Okay, 3 shirts and 2 jacket is this. If the ratio between the cost of 1 shirt and 1 jacket is 2:5, तो ये हो जाएगा 6x plus 10x is equal to 4200. तो x will be 4200 upon 16. 16 2s are 36, 16 3s are 48, ये कैंसिल तो नहीं होगा, तो हमें 4 जैकेट की कॉस्ट बतानी है। इंटू 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 1050। रुको 3 शर्ट एंड 2 जैकेट इज दिस। द रेशियो बिटवीन द कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट, तो 2x हो गया, तो हो जाएगा 6x, ये 5x, तो हो जाएगा 10x। तो ठीक है, 4200 अपॉन 16, ये हो गई x की वैल्यू। 4 जैकेट की कॉस्ट बतानी है, तो इंटू 5 इंटू 4 25 5250। Ratio of A to B is this and ratio of B to C is this. A to B और B to C, ये क्या है 5 1, ये क्या है 3 4, 15 3 4। डिफरेंस बिटवीन A एंड C इज 2 7 5 11 की वैल्यू है। सम ऑफ A B C, तो हमें 22 की बतानी है, क्या हो जाएगा 550। If P is equal to this and Q is equal to this, तो 45 अगर रख दें, तो नहीं 45 तो नहीं रख सकते हैं। लेट्स पुट tan थीटा इज इक्वल टू 60, तो cos 60 इज़ 1/2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4/√3, ये हो जाएगा tan 60 है ना, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। लेट्स चेक, P इज इक्वल टू 60 रख रहे हैं, तो 1 - 3 - 2, Q इज इक्वल टू 1 - 1/3, तो हो जाएगा 2/3, तो 1 - P/Q यानी कि -2 डिवाइडेड बाई 2/3, तो हो जाएगा 1 + 3 4, यानी कि फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। A sum is divided into 3 parts such that the second part is
2000 more than the first, and the third part is 5000 more than the first. These parts are lent out at simple interest annually for 3 years. If the total interest earned for all 3 is this, find the original sum. Second part is 2000 more than the first, and the third part is 5000 more than the first. These parts are lent out at simple interest. ठीक है, 3 साल के लिए तो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 18, और इंटरेस्ट हो जाएगा इसका 3000 और 2 ज़ीरो और ऐड हो जाएंगे। तो x के लिए सॉल्व कर लो। 12x प्लस 15x प्लस 18x, ये क्या हो जाएगा 30,000 प्लस 90,000 इज इक्वल टू 3 लाख। तो हो जाएगा 27x, तो ये हो जाएगा 45x इज इक्वल टू 1,20,000 हटा देंगे तो 1,80,000। तो x इज इक्वल टू 4000। ओरिजिनल सम पूछा है, फाइंड द ओरिजिनल सम। A sum is divided into 3 parts such that the second part is 2000 more than the first part. ये हो जाएगा 9,000, 15 4 19,000। A cube of side 16 centimeter is cut into smaller cubes. What is the increase in the total surface area? क्यूब ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर, तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 256 स्मॉलर क्यूब्स ईच ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। तो ईच ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, यानी 4 4 64 ऐसे क्यूब होंगे, और सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर है ना एक की साइड, तो स्क्वायर इसका 16 6 ए स्क्वायर। अब क्या पूछी है, व्हाट इज़ द इंक्रीज। 6 6 36, 5 30, 33, 12 और 3 15, इसका निकालो। 16 चौके 64, 96, 102, 6 4 24, 6 2 12, 14, 6 1 4 4, कितना बढ़ गया है 1536। तो ये 8, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, 4608 सेकंड वाला होगा इसका। What is the largest 4-digit number that is exactly divisible by 36 and 84? 16 2 18 9 27। पहला हो सकता है 14 5, चेक करना ही पड़ेगा। तो लार्जेस्ट देखते हैं, 18 4 22 और 6 28, तो आखिरी वाला तो नहीं होगा। ये हो सकता है क्या 16 9 27, 16 और 9 25 और 7 32, ये भी नहीं होगा। हाँ, ये भी नहीं होगा। तब इन दोनों में से देखते हैं, 17 5 22 और 6 28, 11 8 19 9 28, ये भी नहीं होगा। तो पहले ही वाला होगा 9 से डिविजिबल, पहले ही वाला होगा। इसमें क्या पूछी है, तो इसको अगर हम x से डिवाइड कर दें तो x + 1/x विल बी 17। और ये क्या पूछ रहा है, n क्यूब 17 का क्यूब, 17 का क्यूब होता है हमारा 4913 - 3n 51
दो, 6, 4, 8, 6, 2। When x की पावर 15 + 1 is divided by this, what will be the remainder? तो अगर हम x को 1 मान लें तो when 2 is divided by 2, the remainder is 0। तो आई थिंक 0 ही होगा रिमाइंडर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज रेडियस एंड हाइट इज दिस। तो कोन की वॉल्यूम होगी 1/3 पाई r² h। 7 2 ज़ा 14, 7 8 ज़ा 56, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24 और यूनिट डिजिट विल बी 8। फाइंड द मिक्सड फॉर्म ऑफ दिस। ओके, तो 16 × 2 4 5, 16 5 ज़ा 80, 64 और 8 72, 32 और 7 3920। पहले ही वाला सही है। हाउ मैनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन दैट पासेस थ्रू 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। दो फिक्स पॉइंट, आई थिंक इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। 2 फिक्स पॉइंट है ना, तो आई थिंक इनफाइनाइट होना चाहिए। बाकी इंग्लिश में देखते हैं, हमने पैराग्राफ छोड़ा था। In any organization, the HR department occupies a uniquely influential position, acting as the primary bridge between management and employee. While HR is often associated with policy, performance appraisal, and corporate communication, its deeper responsibility lies in being accessible, responsive, ठीक है, consistent, responsible। ठीक है, द वर्ड परफॉर्मेटिव एज यूज्ड इन द पैसेज मोस्ट नियरली मीन्स symbolic without substance, actively employed focus, performative। ठीक है, 14th वाला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द कोर आइडिया। HR policies determines organizational success, digital tool, HR create depends on everyday administrative determine organizational success। Why is timely response from HR described as a professional obligation? Reduce employee work, technology employee urgency। Professional obligation accelerates issue resolution। It accelerates issue resolution। Conduct employee satisfaction surveys, review compliance document, in self-evaluation, redesign communication strategies। Conduct employee survey। ठीक है, रीजनिंग में कौन सा छोड़ा है, इसका क्या होगा, -53 देन -9 तो जाएगा 6, तो 59 देन -1 और 61 तो -2। इसमें क्या होगा, 53 59 61 देन 62 63 64 65 67, तो 128 हो सकता है। आई थिंक प्राइम नंबर चल रहा है। ठीक है,
और मैथ्स में कौन से रह गए हैं यार। चलो टाइम तो हो ही गया है खैर। सो 145। यस, देखते हैं सेक्शनल क्या स्कोर रहा है। एनालाइज, सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। तो रीजनिंग में तो है 50, जनरल अवेयरनेस में है 21, मैथ्स में है 43, और इंग्लिश में हो गया है कम, 30 हो गया है इंग्लिश में। आई थिंक इंग्लिश में कम हो गए हैं। बाकी परसेंटाइल चेक करते हैं। ओके, परसेंटाइल सही है, तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट मैटर्स। तो अच्छा मॉक तय। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले मॉक में।